Students, today we are going to start chapter number 2, that is relations and functions. Before doing relations and function, we have to do one of the concept, that is Cartesian product. Okay. Now, what is Cartesian product? Let us have two of the non-empty sets. Say in set A we have elements A and B. In set B, let us have elements X, Y and Z. Okay. Now, if we want the Cartesian products of sets A and B, then it is written like this: A cross B. This is not multiplication symbol. इसको क्या पढ़ोगे? A cross B. Okay. Now, in A cross B, that is Cartesian product of two sets, we have ordered pairs. Okay. If we want A cross B in ordered pairs, first element will be of set A and second element will be of set B. It is A cross B, so first element will be of first set A. Okay. And second element will be of second set B. And if it is B cross A, then first element will be of B and second of A, like that. Okay. Now what to do? We have to relate all the elements of first set A with all the elements of second set B. Now we will take A along with X as well as A with Y, then A with Z. Okay. So these are the ordered pairs having first element as of set A and second element of second set B. Similarly, we will relate this element B of set A with all the elements of set B, that is Bx, By and Bz. Okay, so Cartesian product is what? It is a set having the ordered pairs whose first element belongs to the first set and second element belongs to the second set. Okay. In general, we can write like this: A cross B is equals to, it's a set having the elements P, Q such that, ये हमने जनरल में लिया P, Q, such that this first element belongs to first set A and second element belongs to second set B, like this. तो in general it is written like this. तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता है? आपके सारे ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं एज एन एलिमेंट, जिनका फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट का होना चाहिए और सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट का होना चाहिए. Similarly, if we want C, B cross A, this time in ordered pair, we will take first element of the first set B, that is you will relate X by A and B both, similarly Y by A and B and Z by A and B. So you will have XA, XB, then YA, YB and YZA and Z, like this. So if we want B cross A, then in first place we have elements of set B and in second place element of second set A, like this. So this is what? This is a Cartesian product of two sets. Now you must remember few more things about it. If we want the number of elements in Cartesian product, say if we have number of elements in set A, can be denoted like this. We have already done in sets ना, पूरा number of elements in set A को अपन short में N A लिखा करते हैं, है ना? Number of elements in set A जिसको हम symbolically जैसे P से denote कर दें, तो it is 2. Similarly, number of elements in second set B, say Q, is how much? It is 3. We want the number of elements in
elements of second set. Okay, so you will get the number of elements. Now few more things are there to be discussed. If one of the sets is your empty set, मतलब उसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, and if we want the Cartesian product A cross B, अब देखो A आपका फर्स्ट सेट है, उसके एलिमेंट सेकंड सेट के एलिमेंट से रिलेट कराने होते हैं ना, तो बताओ A B को किससे रिलेट कराएं, कुछ है ही नहीं, तो your Cartesian product will again be a null set. तो if out of two of the sets one of the set is empty set, then their Cartesian product will also be what? Empty set. Okay, and same A is your AB, it's a finite set, but say B is your infinite set, say x, y up to either instead of x, y, better I'm going to take the numbers. Okay, I'm taking 1, 2, 3 and up to infinity. Say you can say set of natural numbers. Okay, so if we want A cross B, so in order pairs first element will be from first set and second element will be from second set. So A will be related from 1, 2, 3 and up to infinite number digits are there, na? So it goes up to infinity. Similarly, B1, B2 and so on like this. So this set will be what? Again infinite set. So if out of the two given set, one of the set is infinite set, then their Cartesian product will also be what? Infinite set. Okay. One more thing you must remember, if we have P cross P cross P, P is a name of set, you can take A cross A cross A, whatever you want to. Okay, then it will contain it is a ordered triplet. If three sets are there, then you will get what? Ordered triplet, where this A belongs to P, B again belongs to P and C again belongs to P, because we are taking P cross P cross P, तीनों ही सेट सेम है ना, इसलिए यहाँ पे जो तीनों एलिमेंट है उसी सेट के होंगे and this is said to be what? Ordered triplet. Okay, अच्छा देखो कैसे निकालोगे, समझ लीजिए I have 1, 2 in set P and I want P cross P cross P. Okay, first of all we will find P cross P, मतलब P के एलिमेंट्स को P के एलिमेंट से ही रिलेट कराना है, तो चलो एक बार P को और लिख लेते हैं, तो इट विल बी इजी फॉर अस, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, 1 को आप 1 और 2 से रिलेट करा दीजिए, फिर 2 को 1 और 2 से रिलेट करा दीजिए, बट एक बार और लिख दोगे तो आपको इजी पड़ेगा समझने में। तो सेट के लिए तो ये कर्ली ब्रैकेट ही लोगे, इन दिस सेट यू आर गोइंग टू टेक व्हाट? ऑर्डर्ड पेयर्स. ओके, सो सी इस वन को इन दोनों से कराना है, सो 1 1 फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर हो गया, देन 1 एंड 2, दिस इज योर सेकंड ऑर्डर्ड पेयर. अच्छा 1 को हमने करा दिया, अभी 2 को ले लो, 2 फ्रॉम 1 एंड देन 2 फ्रॉम 2 लाइक दिस. ओके, तो अभी तो सिर्फ P क्रॉस P आया, बट वी वांट P क्रॉस P क्रॉस P. ओके, सो P क्रॉस P क्रॉस P. ओके, अच्छा ये रहा P और ये रहा P क्रॉस P. अब P के एलिमेंट्स को इन सबसे करवा दो, तो देखो इस वन को इन सबसे कराओगे तो 1 के साथ आ जाएगा 1 1, तो ये क्या बन गया? दिस इज योर ऑर्डर्ड ट्रिपलेट. ओके, सिमिलरली 1 को इन सबसे भी कराओगे, 1 के साथ ये आ गया 1 2, फिर 1 के साथ आ गया 2 1 और फिर 1 के साथ आ गया दिस 1 2 2 लाइक दिस. अभी तो 1 को ही हमने चारों से
then 2, 2, 1, and finally 2, 2, 2. Okay. So this is the way you can get a triplet. Okay. So these are what? Ordered triplet. Okay. Now you must remember that AB is not equals to BA. इसको आप ऑर्डर पेयर बोलते ही इसलिए हो क्योंकि फर्स्ट प्लेस में और सेकंड प्लेस में जो एलिमेंट्स हैं वो वही होने चाहिए. अगर आप उनका पोजीशन बदलोगे तो एक नया ऑर्डर पेयर आपको मिल जाएगा. दैट्स व्हाई. ओके. तो AB इज नॉट इक्वल्स टू BA. तो these because इसको ऑर्डर पेयर हम इसीलिए बोलते हैं. नाउ लिसन, इफ वन ऑफ द ऑर्डर पेयर इज इक्वल्स टू अदर ऑर्डर पेयर, से AB is equals to CB, this only happen if first element is equals to first element and second is equals to the second one. So then if two ordered pair are equal, that means first elements are equal and second elements must be equal, like this. This is one of the important concept. On this we have questions, short questions which are important for the point of view of exam. I am taking one of the examples. So if these ordered pair are given to you equal and you want the values of x and y. Okay. तो कैसे निकालोगे? As ordered pair are given to you equal, that means first element is equal to the first element of the other ordered pair. So value of x will be simply what? 2, isn't it? And simply you will equate the second elements. Minus 5 will be equals to y plus 3. So your y will be, ये minus 5 है, plus 3 को आप इधर ले आओ, becomes minus 3 equals to y. So your y is what? Minus 8. So this is one of the important concept. Okay. So you will remember these things to do your exercise first. Okay. In exercise 2.1, first question is, if x upon 3 plus 1 comma y minus 2 by 3 is equals to 5 by 3 comma 1 by 3. These are the two ordered pairs which are given to you equal and you are going to find the values of x and y. Okay. Now as they are equal, that means first element must be equals to the first element of next ordered pair. Okay. And second elements will be equal. So just you have to equate the elements of both the ordered pairs, and here you can take the LCM. So in both the side denominator is same, so cancelled out, and simply you will get x as 5 minus 3, that is 2. And here I have taken minus 2 by 3, in other side becomes plus, and after taking the LCM we will get y as what? Equals to 1. Okay, it is simple concept and it is important question. Now in second question, if the set A has 3 elements and the set B is given to you having elements 3, 4 and 5, then find the number of elements in A cross B. To get the number of elements in A cross B, you must have the elements in set A and set B. Number of element in set A are already given to you, that is 3. So number of element in set A, we can denote it by P, is given to you 3, and number of elements in set B we can denote by Q, which is how much? 1, 2, 3. It is 3. So number of element in A cross B will be P multiplied by Q, that is P and Q are what? 3 and 3. So 3 multiplied by 3 gives you what? 9. Okay. Third question you will be able to do by yourself. Okay. G and H, two sets are given to you, and just you have to find G cross H and H cross G. In fourth question,
true and false are there, and you have to give the justification, and if it is false you have to give the true one. Okay, in first part, if P is given to you a set having elements m n, and in Q you have elements n m, and then P cross Q is given to this one. It is false. Why? You know that in P you have two elements, in Q you have two elements. So in P cross Q, how much elements must be there? 2 multiplied by 2, that is 4. But it is only 2. So it is false, and P cross Q will be, as it is P cross Q, in ordered pair, first elements belongs to P and second elements belongs to Q. So this m will be related to n and m, so mn mm, and this n will be related to both n this one and n m this one. So this is the correct. In second part, if A and B are non-empty sets, then A cross B a non-empty set of ordered pairs xy such that x belongs to A and y belongs to B. It is true. आपको पता है ना, जब A क्रॉस B हम निकालते हैं तो उसके सेट में ऑर्डर्ड पेयर्स एग्जिस्ट करते हैं, जहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट का होता है और सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट का. सो दिस इज ट्रू. इन थर्ड पार्ट, इफ A इज set having elements 1 2 and B contains the elements 3 4, then A cross B intersection phi is phi. So it is true. How? You know that B intersection phi, मतलब B और phi में कॉमन क्या है? नथिंग, बिकॉज phi इट्स एन एम्प्टी सेट, तो कुछ कॉमन हो ही नहीं सकता. सो B intersection phi is again what? Phi. Now this A cross B intersection phi is phi and A cross phi, मतलब आपको बताया था अगर किसी भी नॉन एम्प्टी सेट का एम्प्टी सेट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं तो वो क्या होता है? फाई. क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो ए के एलिमेंट्स आप किससे रिलेट कराओगे? होंगे ही नहीं. सो इट इज़ व्हाट? फाई. सो दैट्स व्हाई इट इज़ व्हाट? ट्रू. ओके. आफ्टर दिस fifth question is quite simple. I have already explained in the matter. A cross A आपको find out करना है and set A is given to you. Okay. And in sixth question, if A cross B is given to you, Cartesian product is already given to you, just you are going to find A and B. As I told you that in Cartesian product A cross B in ordered pairs, first elements belongs to the first set and second elements belongs to the second set. So simply you will, for set A you will take first elements A and B. आपको पता है ना सेट में रिपीटेशन की ज़रूरत नहीं होती है. So just A and B will be there, and in set B it is second set, so second elements that is x and y will be there, है ना. तो this is the way you can get the sets if Cartesian product is given to you. Okay. In seventh question, let A is this one, B, C and D. 4 sets are given to you and verification is required. In first part, A cross B intersection C is equals to A cross B intersection A cross C. Verify करना, that means equal लाकर दिखाना है. तो you will solve this left side and right side separately and see कि they are equal. Okay. So first of all, left hand side is A cross B intersection C. So A is the set this one and B intersection C. तो B और C का कॉमन आप देख लीजिएगा. इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन, C कुछ भी कॉमन नहीं है. सो इट इज़ योर नल सेट. इधर यू कैन राइट phi instead of the empty bracket. So you know that whenever cross product of a finite set and a null set is taken, it is what? An empty set. Okay. Similarly we will take right side. This is the right side. Okay. एंड A क्रॉस B में आपको A और B का कार्टेशियन प्रोडक्ट चाहिए, तो 1 को 1 2 3 4 सबसे रिलेट करा दोगे और फिर इस 2 को भी 1 2 3 4 सबसे रिलेट करा दोगे. दिस इज़ योर A क्रॉस B. एंड फॉर A क्रॉस C, A के एलिमेंट C से रिलेट कराना है, तो 1 को 5 6 के साथ ये रहा
एंड 2 को भी 5 6 के साथ ये रहा है ना। एंड नाउ हमको इनका इंटरसेक्शन चाहिए था। सी इनमें कुछ भी कॉमन नहीं, यहाँ पे 1 जो है 1 2 3 4 से रिलेटेड है और यहाँ पे 5 6 है, तो नथिंग इज कॉमन। यहाँ पे 2 1 2 3 4 से रिलेटेड है, यहाँ 5 6 है, अगेन नथिंग इज कॉमन, सो इट इज अगेन अ एम्प्टी सेट। तो बोथ साइड्स आर व्हाट इक्वल, तो दिस इज वेरीफाइड इन दिस वे। ओके, so left hand side is equals to right hand side. In second part you have to show that A cross C is subset of B cross D. So first of all you will find A cross C and B cross D. तो A cross C अभी हमने निकाला था फर्स्ट पार्ट में, वो आप लिख देंगे, और B क्रॉस D, B के एलिमेंट्स को D के एलिमेंट से आप रिलेट करवा देंगे। नाउ यू विल सी दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ A क्रॉस C आर देयर इन B क्रॉस D, दैट मीन्स A क्रॉस C इज अ सबसेट ऑफ B क्रॉस D। ओके, 8th question is quite simple, you will be able to do it by yourself. I am taking 9th question. In 9th question, let A and B be two sets such that number of element in set A is 3 and number of element in set B is 2. And if ordered pairs x, 1, y, 2, z, 1 are in A cross B, find A and B. तो पहले तो आपको A और B सेट्स फाइंड आउट करने हैं, पता है ना। अगर ये A क्रॉस B है तो ये जो ऑर्डर पेयर है इनमें फर्स्ट प्लेस में A के एलिमेंट्स हैं और सेकंड प्लेस में B के एलिमेंट्स हैं। तो देखो A में आपके ये X, Y और Z जो फर्स्ट प्लेस वाले एलिमेंट्स थे ऑर्डर पेयर्स में वो आ गए, और सेट B में जो ऑर्डर पेयर में सेकंड प्लेस में एलिमेंट्स थे दे आर 1 and 2, वो आ गए। ठीक है। In 10th question, it is again simple one. The Cartesian product A cross A has 9 elements, among which are found -1 0 and 0 1. तो A क्रॉस A दोनों ही सेम सेट है, मतलब जो ऑर्डर पेयर में जो एलिमेंट्स है ना वो दोनों A के ही है, बिकॉज इट इज़ A क्रॉस A. तो 2 of the ordered pairs are given to you. Out of the 9 ordered pairs you are going to find the set A and then remaining elements of A cross A. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेट A विल बी, अब क्योंकि A क्रॉस A है तो दोनों जगह A के ही एलिमेंट है, -1 0 और 1 तीनों आपके A के ही एलिमेंट हुए, है ना। बिकॉज A क्रॉस A हैज़ 9 एलिमेंट्स, तो A में ऑब्वियसली 3 होंगे, तभी तो 3 × 3 9 आया। तो दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ योर सेट A. नाउ वी वांट द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ A क्रॉस A. तो एक बार A को वापस लिख देना, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। आप -1 को पहले तीनों से रिलेट करा दो, फिर 0 को तीनों से और फिर 1 को तीनों से, 2 बार लिख लेते हैं तो -1 को इन तीनों से, ये देखो है ना, फिर 0 को इन तीनों से, ये रहा, और उसके बाद 1 को भी इन तीनों से रिलेट करा दोगे। दीज आर 9 एलिमेंट्स ऑफ योर A क्रॉस A. तो दिस कंप्लीट्स एक्सरसाइज 2.1.